Yes, Peter, good morning. We were doing enzymes. All this we have done. Carbonic anhydrase. Yes, we did this. You remember we did some terms yesterday? Average energy, activation energy, transition state. Are these terms okay? Class 11th. Anadi, Krish, Zeba. We okay with these terms? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Chalo, theek hai then. Activation energy, temperature and pH. We talked about optimum temperature and optimum pH. Then we also talked about how much temperature above which these enzymes become inactive. And finally, we did the concentration of substrate. But till a certain level, see, the product is going to increase. After that, it becomes constant because no more enzymes are available for the substrate to bind. So velocity which reaches the maximum speed, what was that known as? The velocity of the reaction? What is the term we had used? What is it called in chemistry, chemical Vmax. reaction? Vmax. Vmax, maximum velocity. That is Vmax. Yes. Then we did this competitive and non-competitive inhibition. We did example of competitive inhibition. Now today we're going to start with this. This is the last topic of the chapter. Classification and nomenclature of enzymes. Like we've got so many enzymes. So it's very difficult. Like in plants and animals also. You make categories and your study becomes easier by classification. Classification, everybody knows what is nomenclature. What is Ma'am, nomenclature? naming. Very good. It is naming. So let us first classify and see what kind of enzymes we have. First is oxidoreductase dehydrogenases. This is a category. This is not the name of one enzyme. All the enzymes which perform this function will be put in the category of oxidoreductases. In class 10th, we did redox reactions. Oxidation and reduction take place in the same reaction, then we call it as a redox reaction. So it's something over here almost the same. Okay, see this first equation. S reduced, S dash oxidized. Now this is going to change. S will become oxidized and S dash will become reduced. If you remember oxidation, addition of oxygen and removal of Hydrogen. Hydrogen. Hydrogen, and reduction is addition of hydrogen and removal of oxygen, Oxygen. yes. So whatever was given by this was taken by this. So this becomes oxidized. Let us imagine that this is getting reduced. That means it is losing oxygen. And that oxygen is being gained by this one. So this one will now become oxidized and the other one will become reduced. So if you find such a reaction where oxidation and reduction both are taking place, the enzyme involved category are oxidoreductases enzymes. Second is transferases, second category. See, this is a complex, SG complex we have. We have another one, another substrate that is S dash. See the change that is happening. Can you relate it to the reactions we've done in 10th? Combination displacement. displacement, Very good. Displacement reaction. Excellent. It's a single displacement or a double displacement reaction? ध्यान से देखो बेटा. single, Very good. It's a single displacement reaction. S G के साथ यहाँ पे S था, S dash अकेला था. बट अगर आप प्रोडक्ट्स में देखते हैं तो G के साथ ये वाला आ जाता है S dash. ये probably more reactive है, तो ये यहाँ चला जाता है. Reactivity series के according पढ़ा होगा. Highly reactive metals displace the less reactive metals. So जो आपका केमिस्ट्री में 10th में ये रिडॉक्स था, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है. इसको हम ट्रांसफरेजेस बोलते हैं बिकॉज ट्रांसफर हो रहा है. इफ यू सी वन सबस्ट्रेट टू द अदर, ये वाला बाइंड कर नहीं रहा था, ये अब बाइंड कर रहा है, ये अलग हो जा रहा है. थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोलेसिस. ओके, हाइड्रोलेसिस. व्हाट इज अ हाइड्रोलेसिस रिएक्शन इन केमिस्ट्री? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस. Have you come across the word hydrolysis in chemistry?
बेटा जब भी कोई सबस्ट्रेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे छोटे मॉलिक्यूल से ब्रेकअप कर जाता है, then that reaction is called hydrolysis. ओके, सपोजिंग आप ऐसा समझ लो कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. एंड व्हाट विल हैपन टू दैट? एस्टर्स, अगर याद होगा थोड़ा स्टेरिफिकेशन वगैरह पढ़ा था हमने, याद है एस्टर्स? थोड़ा बहुत केमिस्ट्री टेंथ, चलो फॉरगेट इट अगर नहीं याद है तो. जस्ट रिमेंबर दिस, कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया एंड छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड से ब्रेकआउट कर जा रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है. यहाँ पे वाटर इज इन्वॉल्व ऑलवेज. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, वाटर के साथ रिएक्ट करा. देखिए बेटा, H2O, 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन, तो O और H तो A के साथ कंबाइन कर गया. एक हाइड्रोजन जो बच गया वो B के साथ आ गया. सो प्रोडक्ट्स कौन से बन गए हमारे? बताओ. BH. Which kind of a reaction is this in terms of kinds of reactions done in class 10th? Double displacement. Very good. Double displacement. यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया. Come to this. Lyases. This is the third category of reaction. Lyases. क्या दिख रहा है इसमें? क्या हो रहा है? दो विल टेक अप अभी डिटेल में, एक बार इधर समझा देते हैं साथ साथ एग्जाम्पल लेके. Let me do this. Oxidoreductase dehydrogenosis. We have done this. Oxidation हो रहा है, यहाँ reduction हो रहा है एक साथ. एक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. Transferases, we did this. ट्रांसफर हो रहा है बेटा, बट याद रखना ट्रांसफरेजेस में हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता है. This is the example we did for hydrolysis. Esters, okay, ether, peptide, glycosidic, ये सारे के सारे bonds जो है interchange हो जाते हैं with the help of water. These categories are known as hydrolysis. Now come to lyases. Catalyze the removal of groups by mechanisms other than hydrolysis, leaving double bonds. क्या समझ में आ रहा है बच्चे इसमें? Read the sentence. Lyases का फंक्शन क्या समझ में आ रहा है? Try. देखो बेटा, लाइएजेस कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम क्या करता है, ये ज्वाइन कर देता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या स्पेसिफिक ग्रुप्स को बाय डबल बॉन्ड. कोई दो मॉलिक्यूल्स या कोई दो ग्रुप्स को डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर लेता है. दैट प्रोसेस, दैट एंजाइम इज व्हाट वी कॉल एज, व्हाट इज इट कॉल्ड? Lyase. What is this category called as? Lyases. Lyase. एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करा है इसने, ठीक है. ये जनरली लाइएजेस डबल बॉन्ड बनाते हैं बेटा, जनरली. तो ये ब्रेक करा है, 2 में जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरली एग्जिस्ट करता ही है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है अदर देन हाइड्रोलिसिस. सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन लाइएजेस. अच्छा, लाइगेजेस तो नहीं पढ़ा है ना अभी आप लोगों ने? हाइड्रोलिसिस और लाइगेजेस में क्या डिफरेंस समझ में आया? अगर वाटर के साथ एडिशन होके ब्रेक डाउन हो रहा है, ये देखिए वाटर के साथ एडिशन होके ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये हाइड्रोलिसिस कैटेगरी है. एंड रिएक्शंस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. एंड दीज एंजाइम्स आर नोन एज हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, पहचानिए. Amino group. हाँ जी, Amino group. अमीनो. श्योर, पहचानो कौन सा ग्रुप है ये? Ketone. हाँ जी बेटा, कीटो. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा, पहचानो फंक्शनल ग्रुप्स क्लास 10th में करे हैं, पहचानिए Ma'am, जल्दी. we have not done this.
And syllabus was reduced. I really find it very interesting. Why did they reduce the important things in class 10th? यही तो दिक्कत है. They should not have been released. बेटा थोड़ा देखो ना, सी साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो. Ketone. हम्म. Ketone. ओके. कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है. कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये, RCOOH. तो ये अलग हो गया है हमारा, CO2 बच गया. मतलब एक फंक्शनल ग्रुप को ये अलग कर देता है. इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स देता है प्रोडक्ट्स में. तो सच काइंड ऑफ एंजाइम्स आर व्हाट आर दे कॉल्ड? लाइएजेस. नेक्स्ट कैटेगरी तो बहुत इजी है, आइसोमेरेसिस. आइसोमेरिज्म तो पता ही है, इंटरचेंजिंग हो जाएगा, एटम्स वही रहेंगे, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी. ABC BCA. इसका एक और आइसोमर फॉर्म बताइए. लेटर्स यही रहने चाहिए बेटा, बस अरेंजमेंट चेंज हो जाता है. इंटर कन्वर्जन है ऑप्टिकल इमेजेस. ABC का BCA बन सकता है, और क्या बन सकता है? CAB. हाँ, बन सकता है. So basically what I'm trying to say is we have the same atoms, they are optical images, rearrangement इधर उधर हो जाएगा, that is all. These are isomerases. Last is ligases. ये adding का काम करते हैं. अभी तक हाइड्रोलेज हमने पढ़ा, वो ब्रेक कर रहा था. लाइएजेस ब्रेक करते हैं. एडिशन का काम लाइगेसेस करते हैं. देखो कॉम्बिनेशन ऐड कर रहे हैं, लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स टुगेदर. ठीक है. कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना देगा, कार्बन सल्फर में बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन में बनाएगा, फास्फोरस ऑक्सीजन. बेसिकली बस आप ये याद रखो कि दो कंपाउंड्स को लिंक करने का काम है. एंड एनर्जी इज ऑलवेज नीडेड फॉर सच रिएक्शंस. एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. इफ यू सी एक्स एंड वाई कंबाइन करने हैं, ये दो कंपाउंड्स ऐड होने हैं, लिंक होने हैं, तो हम लोग लेफ्ट साइड पे क्या लिख रहे हैं? ATP. दैट मीन्स एनर्जी यूज हो रही है. ओके. एंड साथ में जब रिलीज हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेटा, ये दोनों ऐड हो गए, लिंक हो गए ये दोनों तो, एंड ये ब्रेक कर गया. दिस इज ADP एंड दिस इज PI. व्हाट इज PI? लाइफ प्रोसेस था क्लास 10 में, फर्स्ट चैप्टर हमारा. Life process was the first chapter, if I'm not wrong. Yes, ma'am. So conversion of ADP to ATP and ADP to ATP पढ़ा होगा. What is this PI? When ATP breaks down, two things are made. अगर आप 10th की बुक भी खोलोगे इस चांद में, सेम टू सेम वर्ड मिलेगा. ATP को ब्रेक करो बेटा, ADP plus PI. What is PI? Ma'am, or inorganic phosphate. Excellent. It is inorganic phosphate. Okay, very good. This is inorganic. The phosphate which is not present in plants and animals, that is inorganic phosphate. Though we have phosphate in plants also, उसको हम simply P लिखते हैं. P. अगर सिर्फ P लिखा है, that means we are talking about organic phosphate. But अगर PI लिख दिया है, that means inorganic phosphate. बेटा ATP is actually stored energy है. You know this energy currency. So when this breaks, तो डाइफॉस्फेट हो रहा है, तो एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा जा रहा होगा, ये देखिए. दिस इज ट्राइफॉस्फेट. जब ब्रेक करेगा तो ADP और एक फॉस्फेट बचेगा. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस I, प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स. चलिए कोफैक्टर्स. सो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स? जल्दी देखिए. ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफरेजेस. ट्रांसफरेजेस you can relate it to single displacement. Hydrolysis is addition of water, kind of double displacement with water. Functional group अलग हो रहा है with double bonds. This is liases, isomerases, optical images देगा. Ligases link करेगा दो compounds को. देखिए X plus Y अलग थे, reaction के बाद XY बन गए. And energy will be needed for such reactions. Let's move on to cofactors. Enzymes में cofactor क्या चीज होती है? We said enzymes are actually proteins. हमने पढ़ा था ना, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. So enzymes तो proteins होते हैं, but cofactors क्या होते हैं? ये हमारा cofactor है, देखो. Non-protein constituents bound to the enzyme to make the enzyme more active. Enzyme खुद तो बेटा protein है,
बट वो कभी कभी किसी ऐसी चीज से कंबाइन करता है जो नॉन प्रोटीन है, एंड क्यों उससे बाइंड कर जाता है? ताकि वो एक्टिव हो जाए, कैटालिटिकली एक्टिव हो जाए, इट कैन एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट. सो दैट सब्सटेंस इज नोन एज द कोफैक्टर. अकेले काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यू आर एन एंजाइम, यू आर अ प्रोटीन. अपनी फ्रेंड का हेल्प ले लीजिए, जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा. दो योर फ्रेंड इज नॉट फ्रॉम द सेम क्लास, मान लीजिए प्रोटीन नहीं है, तो भी आपकी हेल्प तो हो जाएगी. सो एक्टिव हो गया, ये कैटालिटिकली एक्टिव हो गया बाय बाइंडिंग विद अ factor which is not a protein. So that factor which is not a protein but which on binding with the protein can make the enzyme very active is known as a cofactor. Cooperation, support करेगा. Apoenzyme, protein portion of the enzyme is what we call as apoenzyme. ये देखिए बेटा, ये वाला जो है ये प्रोटीन पोर्शन है, ये बाइंडिंग साइट है हमारे एंजाइम की. ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ सकता है. इस केस में ये जो एपोएंजाइम है ये इनएक्टिव स्टेट है. इनएक्टिव प्रोटीन है बट प्रोटीन कैटलिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा है. एवरी प्रोटीन डज नॉट एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट. अब ये जो बाइंडिंग साइट थी यहाँ पे ये आके कोफैक्टर जो है फिट हो गया. ये देखिए ये वाला, इसको ग्रीन से दिखाया है. दिस इज नॉट अ प्रोटीन बट आफ्टर दिस बाइंड्स, ये एंजाइम जो है एपोएंजाइम ये एक्टिव है. तो हॉल एंजाइम, please see this, apoenzyme is inactive or active? Inactive. Yes. What is binding with it? Cofactor. Cofactor. Yes, cofactor. Cofactor bind करने से बेटा एंजाइम में क्या चेंज आया? It becomes catalytically active. Yes, beta. So apoenzyme is what? It is the protein part of the enzyme. Just remember, apoenzyme is the protein part of the enzyme, and this cannot act like a catalyst. It's inactive form. So what happens? They generally bind with whom? A cofactor. Cofactor, is cofactor a protein? No, No, ma'am. ma'am. Yes, beta. Okay. जब हम hollow enzyme बोलेंगे, that means we are talking about a combination of apoenzyme and a cofactor. That means the active form of a enzyme. Remember these words: apoenzyme, inactive form of an enzyme. We say this is an apoenzyme, मतलब ये active नहीं हुआ है. And जब उसमें cofactor add हो जाएगा, so hollow enzyme बनेगा. So wherever you come across this word hollow enzyme, मतलब एक enzyme जो active है. And how has it become active? Because it is binded with a cofactor. When the cofactor is removed from the enzyme, its catalytic activity is again lost. Supposing I remove this, so the power of catalysis which it had, that power will go away. So we have some new terms here. All the three terms are new terms: apoenzyme, cofactor, and haloenzyme. Protein part of the enzyme, which is non-active as a enzyme, is known as? Apoenzyme. Very good. Now, although it is a protein beta, okay, but it's not active. It cannot act like an enzyme. Now, it binds with a cofactor, which is not a cofactor. Is not a Protein. yes, बच्चे, it is not a protein. So जब ये bind कर जाएगा binding site पे, अब ये active हो गया, and this active form is called hollow enzyme. चलिए इसको remove कर देते हैं cofactor को. Now will it be active? No, ma'am. So we are done with three new words: apoenzyme, cofactor, and hollow enzyme. देखिए cofactors. See, prosthetic group, coenzymes, and metal ions. Let me explain this to you. They are all cofactors only. Okay, I'm talking about cofactors. Three types of cofactors. First, prosthetic group. Organic, tightly bound to apoenzyme. ये वाला जो है आपका, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये वाला ये बहुत टाइटली बाइंड हो जाता है किसके साथ? एपोएंजाइम के साथ. द कोफैक्टर, आप समझो यहाँ पे. tightly bound to what? Apoenzyme. These are which? Prosthetic groups. Example, heme in peroxidase and catalase. They catalyze the breakdown of H2O2, hydrogen peroxide, to water and O2. ये catalase देखिए, ये peroxidase है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, ठीक है, हीम
Which part? Heme in peroxidase. Basically बस आप इतना समझ लीजिए कि जो बहुत टाइटली बाउंड कर जाते हैं कोफैक्टर्स किसके साथ, बस इतना समझ लो, नो नीड टू लर्न द एग्जांपल्स. अगर कोफैक्टर ये वाला बहुत टाइटली बाइंड कर रहा है आपके एपो एंजाइम के साथ, ठीक है, दिस इज विच ग्रुप, व्हाट ग्रुप इज दिस? प्रोस्थेटिक ग्रुप. Which kind of a cofactor is this? Tell me. No need to do these examples. बस इतना समझ लीजिए, जो भी cofactor बहुत tightly bound कर जाएगा, okay, then that cofactor will belong to which group, beta? Prosthetic group. Yes, only remember the first one. No need to learn the examples. Now we come to the second category. देखो. If I go back to my previous slide, I told you we have 3 categories of cofactors. Prosthetic group तो वो हो गया जो बहुत tightly bind करता है किसके साथ? Apoenzyme के. Now we'll do coenzymes. Transient binding to the enzymes, to the apoenzyme. Okay? वहां पे कैसी बाइंडिंग हो रही थी बेटा फर्स्ट वाले केस में? Tight or Tightly loose? binding. Tightly. Yes, tightly bind. Very good. Now see, binding for a long time. ठीक है, ट्रांजिएंट बॉन्डिंग. परमानेंट कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, एक बार बाइंड हो गया तो बस बाइंड हो ही गया. ठीक है बच्चा, इस तरह की बाइंडिंग हो गई हमारी. ट्रांजिएंट इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, या फिर ट्रांजिएंट बाइंडिंग बोलते हैं. ओके, इट इज अ ट्रांजिएंट इंटरेक्शन और यू कैन से इट इज अ ट्रांजिएंट बाइंडिंग. सो ये परमानेंटली आप समझ लो कि एक बार बाइंड हो गया तो हो ही गया. इसको आप रिमूव कर सकते हो, टाइटली बाउंड है बट आप एपो एंजाइम से निकाल सकते हो. ये एक बार बाइंड हो गया तो परमानेंटली हो गया. दिस इज ट्रांजिएंट बाइंडिंग. कोएंजाइम्स अभी दोनों मिलके हमेशा साथ रहेंगे तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कोएंजाइम्स. थर्ड वाला मिडल लाइंस, दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स. Which kind of bonds they are forming? Coordination bonds with the side chains at the active site and one or more coordination bonds with the substrate. Basically, they are forming which kind of bonds? It's on your screen. Coordination bonds. Coordination Yes. bonds. And many coordination bonds they are forming. बेटा बहुत सारे. Coordination bond मतलब इतना confuse होने की जरूरत नहीं है. Covalent bond पढ़ा था, शेयरिंग वाला जो होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. Yes, ma'am. You did ionic and covalent bonding or this was cut? We did, ma'am. Okay. However, there is a small difference between a covalent bond and a coordination bond. ठीक है बच्चे, देखो जल्दी से. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड. नॉर्मली आपने देखा होगा कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम डिफरेंट एटम्स. व्हाट अबाउट क्लोरीन? टेल मी, क्लोरीन मॉलिक्यूल जब बनता है, व्हिच काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आयनिक और कोवैलेंट? Covalent. Yes. So we have how many atoms of chlorine binding together to form a covalent bond? Cl2 बनता है ना बेटा? Yes, ma'am. So one atom क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दूसरे वाले से एक और इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया. What I'm trying to say is difference between coordination bond and covalent bond समझो. कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो दोनों एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं. एक इधर से आया, एक इधर से आया. अगर 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो 2 इधर से आए, 2 इधर से आए. बट इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम द सेम एटम, तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. इसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड. इज इट ओके? फाइन. Both the shared pair of electrons, they are coming from where? They are coming from the same atom. That is the difference between a covalent bond and which bond? Covalent Coordinate bond. bond. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला जो बॉन्ड है ये. सो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएगा. इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयरिंग हो रही है वो एक ही एटम से आ रहे हैं. किसके साथ बाइंड करेगा? या तो साइड चेन्स के साथ बाइंड कर जाएगा, जो भी एक्टिव साइट्स है, या फिर डायरेक्ट सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड करेगा. यू डोंट हैव टू लर्न द एग्जांपल्स. All you need to do is you need to remember the binding patterns. We had 3 kind of cofactors. Prosthetic जिसमें tightly bound था. Transient binding, long term binding है, हो गया तो बस हो ही गया. ये देखिए NAD and NADP, ये वाला देखिए. See this?
परमानेंटली बाइंड हो गया बेटा, ये देखो निकोटिनामाइड, ये वाला ये है, ये यहाँ पे देखिए बाइंड हो गया, ये दिख रहा है हमें. So this kind of a binding is which binding? Transient binding. And अगर coordination bonds बनते हैं, then this is metal ions. के साथ these are metal ions. I'll just show you this. Learn the categories very quickly, and then let us discuss the difference between the three cofactors. जल्दी से screen पे देखिए 3 types of cofactors, and then I'll start. We'll discuss the differences between them. Okay, the protein part of an enzyme is called? Yes, beta. Apoenzyme. Very good. Apoenzyme is active or inactive state? Inactive. Inactive. Very good. So to become inactive, it binds with a cofactor. Is the cofactor protein or a non-protein part? Non-protein. Non-protein. अच्छा, इसके साथ bind करते ही आपका apoenzyme क्या हो जाता है? Active. Very good. Active. Very good. Very good. So inactive state से it becomes active. So that state where it becomes active, क्या बोलते हैं उसको? apoenzyme तो नहीं बोलते हैं. Holoenzyme. Holoenzyme. Very good. So when we say holoenzyme, it's a combination of apoenzyme and Enzyme Cofactor. cofactor. yes, beta. It's a combination of these two things. So cofactor, please remember, it is not a protein. That is the most important thing we always need to remember, that it is not a protein. Cofactor जो है वो protein नहीं होता है. We did 3 categories. I think it's on your screen also. 3 categories of cofactors. Which is the first one? Prosthetic group. Yes, prosthetic group. Prosthetic group में कैसा binding होता है? चलो चलो जल्दी. Tight Prosthetic bond. group. Tightly binding. Yes. Tightly Okay. binding, but of course it can be removed later. What about coenzymes? Which kind of binding? Transient. Transient. Binding. Long-term bind. Okay. Charo. Third was which one? Metal ions. Metal ions form which kind of bonds? Coordination. Coordinate. Coordinates. As you know, only metals always lose electrons to form positive ions. So metal ions, जो भी electron sharing कर रही हैं ये आएंगे दोनों सब metal से ही. So that is why covalent bond नहीं बन रहा है बेटा. कौन से bonds बन रहे हैं? Coordinate bond. Bonds. Yes. The difference between bonds is clear. Coordinate and Yes, ma'am. covalent bonds. We have 6 categories of enzymes. Giving a 1 second for this page first. First 3 categories very quickly. Let's do it. We're done with the chapter. We need to quickly revise. We still have some time. Then I'll take a quick revision of enzymes. Yes, beta. What are the 3 categories? The first one is oxido. Oxidoreductase. I think the name itself tells you oxidation reduction, redox kind of a reaction. Second category, Transferase. yes, single displacement जो है, and the combination addition reaction with water, double displacement हो रहा है, but याद रखना हमेशा water का addition जरूरी है. This is hydrolysis. The reaction is called hydrolysis, and the enzymes which are involved are called hydrolases. चलिए ये वाला कौन सा है? What is this category जो functional groups को remove करता है, double bonds वाले groups बनाता है? Lysis. Lysis. ये वाला optical images है, atom same है. What is this? Isomerases. Yes. And when 2 compounds have to bind together using energy, X plus Y Radiation. combine हो रहा है,
Yes, beta. Very good. Binding work is always done by ligases. क्लास 12th में आप आगे जाके जब बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो हम लोग डीएनए को कट कर देते हैं with the help of certain enzymes. So after we cut the DNA, we have to join the DNA. So joining वाला DNA fragments का काम भी फिर यही एंजाइम करता है. What is the name of this enzyme जो बाइंडिंग करता है, joining करता है? लास्ट वाला Ligases. ligases. It's like a glue. Normally what you people use, it's like sticky thing, glue की तरह काम करता है ये ligases. So these are the 6 categories. Okay. अब इसको देखिए फटाफट. Non-competitive and competitive inhibition. Now let us talk about this. कभी कभी कुछ specific chemicals bind कर जाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी सब गड़बड़ कर देते हैं. These substances are known as inhibitors. And what is this process known as? Inhibition. Inhibition. Yes, बेटा. Actually क्या होता है ना बेटा, जो एंजाइम का बाइंडिंग साइट होता है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है. सो उसी शेप का सबस्ट्रेट उसमें बाइंड कर सकता है. सो सबस्ट्रेट से मिलती जुलती शेप का कोई और सब्सटेंस, ठीक है, वो भी उसकी शेप भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, वो बाइंड नॉर्मली कर ही जाता है एंड पूरा एंजाइम एक्शन इनहिबिट हो जाता है. सो बेसिकली वी हैव टू काइंड्स ऑफ इनहिबिशंस, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ था? How is non-competitive different from competitive inhibition? You have a clue on your screens also. Competitive and non-competitive inhibition. What was the difference? Non-competitive में देखो बेटा, inhibitor is there, but the inhibitor is not binded to which site? The active site. Please see the first case. आपका जो blue वाला circle है, that is what? Inhibitor, no? Yes, ma'am. So it is binding to the active site of the enzyme. No, ma'am. No. So such kind of binding से कोई फर्क नहीं पड़ेगा enzyme के action पे, because active site पे bind नहीं कर रहा है. So this is non-competitive enzyme. Non-competitive because अपना original substrate जो है वो green color का जो आपको दिख रहा है yellowish green, वही bind कर रहा है active site पे. उसके लिए कोई competition नहीं है क्योंकि वो active site के लिए नहीं लड़ रहा है जो आपका additional आया है inhibitor. But if you go to the second case, देखिए बेटा, shape काफी मिलती जुलती दिख रही है substrate and inhibitor की. Yes, ma'am. Yes. First case में shape is not similar. तो अगर वो आ भी जाएगा inhibitor, तो वो active site पे bind नहीं कर पाएगा. But in the second case, if you see the substrate and inhibitor का shape is almost similar. So there is going to be a competition now कि कौन bind करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों exactly fit हो जाएंगे active site में, उनका दोनों का shape ऐसा है. If you see in this figure, तो किसने bind कर दिया? Inhibitor bind कर गया कि हमारा substrate bind कर गया? Inhibitor. Yes. So competition था, so वो जीत गए inhibitor. So what is this kind of a process known as competitive or non-competitive inhibition? Competitive inhibition. Yes. If you see here, the shape is entirely different. So वो bind तो कर जाएगा, active site पे नहीं करेगा, तो इसके लिए कोई competition नहीं है. So this is non-competitive. Here the shape is almost similar. Both of them will try and bind over here. ये वाला हो गया. So this is competitive inhibition. We talked about 3 factors which affect enzymes. Yes, can we revise them very quickly? First was temperature and pH. pH. There is a temperature, the most suitable temperature, where productivity of an enzyme maximum, speed maximum कर देता है वो chemical reaction की. That temperature, that pH is known as? Optimum temperature. Optimum temperature. Very good. And if we lower down the temperature, little less than the optimum temperature, what will happen? Enzymes will become Temporarily inactive. Very good. And if we raise the temperature, काफी high कर देते हैं, then what will happen to the enzyme? Enzyme will get Enzyme- destroyed. Yes, they'll get destroyed, they'll get denatured. So this was the effect of temperature and pH. We talked about this. Enzymes get damaged generally at what temperature? More than what degree?
40 degree. 48 degree Celsius. However, there are some bacteria which are called thermophilic. They can survive. I gave an example also for thermophilic bacteria as far as I remember. बताओ कौन सा एग्जाम्पल दिया था? Lactobacillus. वेरी गुड। Lactobacillus. घर में जब कर्ड बनाते हैं बेटा तो गरम करते हैं थोड़ा दूध, ल्यूकवार्म करते हैं मिल्क को कर्ड बनाने के लिए. सो इवन इफ यू आर डूइंग इट ल्यूकवार्म, बॉईल नहीं कर रहे तो भी टेम्परेचर समवेयर 60 to 70 डिग्री तक जाता है. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब भी हम Yes, लोग ma'am. घर पे मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो मम्मा क्या करते हैं, मम्मा मिल्क को अगर आप ठंडे दूध में डालोगे तो वो नहीं बनता है, ल्यूकवार्म करते हैं. सो व्हेन आई से ल्यूकवार्म, टेम्परेचर इज समवेयर बिटवीन 60 to 70 डिग्री. दैट इज इट, नॉट 100 ऑफ कोर्स, बॉईल नहीं कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट वो थोड़ा सा हम लोग कर्ड, 1 स्पून कर्ड ऐड करते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम लोग साइंस में, इंग्लिश में? वो जो थोड़ा सा 1 चम्मच कर्ड हमें ऐड करना पड़ता है ताकि दही जम जाए, जो इनिशिएट करता है प्रोसेस को, रिएक्शन को. I'll give you a clue. It starts from I. It's a very common word in English and science. And in both the languages or both the fields, we use the same word. It's inoculum. Have you come across this word somewhere? Inoculum. What is it called? Inoculum. Yes. Inoculum. INO. Very good. याद रखिएगा. INOCULUM. Inoculum. So थोड़ा सा 1 स्पून कर्ड जो हम ऐड कर देते हैं बड़ा सा बाउल में कर्ड बनाने के लिए, जरा सा ऐड करते हैं इनोकुलम. इट कंटेन्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. आप देखते हैं सुबह तक कर्ड जम जाता है, बन जाता है बेटा, बिकॉज आपका बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं. वो प्रोसेस उनका चलता है बिकॉज ऑफ विच मिल्क चेंजेस टू कर्ड. बट द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क वाज समवेयर बिटवीन 60 to 70. लेकिन हमारी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो एक्टिव है. Are they active? Na? That is why able to change milk into curd. Yes or no? Are they active? Yes, ma'am. Lactobacillus. Yes, ma'am. So what kind of? बिल्कुल बेटा. What kind of bacteria are these? क्या बोलेंगे इस category को? Those which can withstand high temperatures compared to other enzymes normally. बाकियों से ज़्यादा. अभी what are these organisms called as? Thermophilic. Very good. Thermophilic organisms. So there are 3 factors which affect the activity of enzymes: temperature and pH, that we've already done. Second is related to temperature only. We talked about thermophilic. And concentration. Concentration पहले जब आप शुरू में बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा rate of